इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज 90. ओके, सो पहले हम क्या कर देंगे, वी विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल. Which angle is 90? Angle Q is 90. So this will be our angle Q, this will be our angle P, and this will be our angle R. Okay. Now it is given in the question that PQ is equal to 12 centimeter. Okay, and PR is equal to 13 centimeter. PQ is 12 centimeter, PR is 13 centimeter. So over here two sides are given, one side is not given, so we will use which theorem? We will use the Pythagoras theorem. So PR square is equal to PQ square, okay, plus QR square. What is PR? 13 square is equal to what is PQ? 12 square plus QR square. ठीक है, 13 square is 169, 12 square is 144 plus QR square प्लस 144 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर. 169 माइनस 144 इज 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर. स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट. बट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, प्लस और माइनस. But over here we are talking about the sides of a triangle, and sides of a triangle can never be negative. So we will only include positive 5. Okay. So QR is 5 centimeter. Okay. Now what we need to find? We need to find tan P minus QR. P चाहिए तो P एंगल हम ले लेंगे. ठीक है, तो P का ये ऑपोजिट हो गया. Yes, this becomes adjacent and this becomes hypotenuse. So what will be the value of tan P? Tan P की फॉर्मूला क्या है? Opposite upon adjacent. Okay. What is opposite? Opposite क्या है? QR. QR हमारा कितना आया? 5. तो 5 upon what is adjacent? Adjacent is 12. ठीक है. So this is our value of tan P. Second हमको क्या चाहिए? Cot R. अलग एंगल चाहिए. पहले हमको एंगल चाहिए था 5, अब हमको चाहिए एंगल R. So we will plot again the same triangle. Everything will remain the same. P Q R. एंगल Q 90 है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 13 है. लेकिन इस टाइम अराउंड हमको क्या चाहिए? एंगल R. So this is our angle R. So this becomes our opposite. This becomes adjacent, this becomes hypotenuse. Now we need to find cot R. Cot R. What is the formula of cot? Adjacent upon opposite. Adjacent क्या है? 5. Opposite क्या है? 12. Now we need to find the value of tan P minus cot R. What is the value of tan P? 5 upon 12. Minus what is the value of cot R? Again the same 5 upon 12. 5 upon 12 minus 5 upon 12, 0.